My name is Deepsa, and today we are doing a topic of physics, alternating current. It's a part of magnetism chapter in CBSE. We all know what current is. Current is flow of electrons. Now, what is alternating current? We typically know a circuit. We typically know a circuit like this, where the current flows from positive terminal. There is a positive terminal and a negative terminal. We know the circuit that the current flows from positive terminal towards the negative terminal. The current continues to flow like this from positive side to the negative side. Does it ever flow like this, the current? No. We never say that the current is flowing from negative side to the positive side. We always say that the current is flowing from the positive side and enters back into the negative side of the battery. Again starts from the positive side of the battery and goes back into the negative side of the battery. Now that is a different kind of current. Alternating current is a current which is a little different, in which the direction of current flow changes continuously. As in, if I take this circuit, see, remember, I have not made a battery, a typical battery I am not making. I am making another symbol which is like a wave. I am making a wave symbol. So in alternating current, what happens is, the current, if I switch on the circuit, I switch on the key, I shut the key, for a moment the current will flow from, suppose, A, B, C to D and back to E. After a moment, the current will flow in the reverse direction, as in it will go from E, D, C, D, A. After a while, again it will start from A, B, C, D, E. So this type of current, which changes its direction regularly. This is also important, regularly. ये नहीं कि अभी 1 घंटे तक ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर 1 सेकेंड के लिए ऐसे फ्लो होगा, फिर नो, it is fixed. So whatever time duration it flows like this, the same time duration it flows in the reverse direction. Then again it flows in the forward direction. Then again it flows in the reverse direction for the same amount of time. Such type of current is known as alternating current. So if for the first cycle, and these are called cycles. So the first cycle may be A to B to C to D to E. Then in the second cycle, it will go from E to D like this. Then in the next cycle, again start from A to B to C to D to E. And this will keep repeating over the entire time. Now this happens over regular intervals. This is also important. एक तरफ से बात, very important बात क्या हो गई? The direction of the current keeps changing. That's the first one. The alternating current changes direction of flow at regular intervals. एक बार ऐसे जा रहा है, 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 and that too, if you notice, at regular intervals. Means suppose 2 सेकंड के लिए ऐसे जा रहा है, फिर 2 सेकंड के लिए ऐसे जाएगा, फिर 2 सेकंड के लिए ऐसे जाएगा, फिर 2 सेकंड के लिए ऐसे जाएगा. हो सकता है 0.5 सेकंड, 0.5, 0.5, 0.5. So these intervals have to be equal of continuous. Okay. So the first point is it changes directions of flow regularly. Second is it changes its value also regularly. Now maybe it is +5, -5, +5, -5. Then it changes signs, as we have discussed, plus and negative. Then it is typically used in transmission. You know that electricity is produced in power stations,
and then it is applied to our homes or to our factories or to hospitals or wherever it is required. So it is AC is the form, alternating currents is the form of current which is used for transmission of electricity from the power stations where it is produced, जहाँ बनता है वहाँ से जो घर में आता है, जो लाइन्स ऊपर केबल्स बने होते हैं, वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ करंट होता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. वो एक बार एक साइड कर लेता है, फिर दूसरी साइड की डायरेक्शन में जाता है, फिर एक डायरेक्शन में जाता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाता है. सो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन from main power station, this is the form which is used. The direct current is not used. Okay, now why is it used during transmission specifically is we just have to know for this level, for class 9 and 10 level, we just have to know that if you use AC, the heat loss, जब आपको पता है जब उधर हाँ मेन से सप्लाई करंट आ रहा है घर पे, फैक्ट्री पे, कहीं पे भी, तो बहुत सारे हीट लॉसेस होते हैं. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड. बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट. हीट निकलती रहती है. आपने देखा वो ट्रांसफार्मर्स में गर्म एयर, वहाँ पे गर्म गर्म लगता है, या इवन इन द ट्रांसमिशन लाइन्स दे बिकम हॉट. सो इफ यू यूज अ डीसी करंट, दैट हीट लॉस, वो एनर्जी लॉस हो रही है. जब अगर हीट निकल रही है इसका मतलब एनर्जी लूज हो रही है. जितनी ही एनर्जी सपोज पावर स्टेशन में 100 सपोज पावर स्टेशन में एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 100 मेगा जूल एनर्जी बनी, बट बाय द टाइम इट रीचेस होम, this will be only 80 megajoules. So during transmission there is a loss of energy. थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है in form of heat. तो अगर AC यूज करते हैं तो शायद ये लॉस सिर्फ 20 megajoules का, मगर अगर हम DC यूज करेंगे तो शायद तो ये लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. मे बी इट बिकम्स 40 megajoules, and what we receive at homes is maybe only 60 megajoules. All I am trying to say कि अगर हम AC यूज करते हैं during transmission, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो लॉस हो जाता है एनर्जी का, वो कम होता है. और लॉस AC में भी होता है, लॉस DC में भी होता है, एनर्जी लॉस. मगर AC में the energy loss is less during transmission. हीट कम बनती है, reduction in the heat energy loss during transmission. Now, what does it look like? It looks like a wave like this. देखो, पहले positive side जा रहा है, फिर negative side जा रहा है. This is the negative side of the current. Then again goes to positive side. Again goes to negative side. What is positive side and negative side? One direction of current is called positive side. The reverse direction of current is called the negative side of the current. Then again it flows in the positive side, then again it flows in the negative side. तो positive negative direction, फिर positive direction, फिर negative direction. मतलब forward direction में flow होता है, फिर reverse direction में flow होता है, फिर forward direction में, और ऐसे ही चलता है. So this is what is alternating current. कि आप कहाँ देखोगे? This will be mostly in the transmission cables. इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हमेशा इस सिंबल से, वेव सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसे यहाँ पर बनाता है. ये जो सिंबल होता है बैटरी का, बैटरी इज अ डीसी डायरेक्ट करंट. इट इज नॉट एसी. इट इज नॉट एसी. तो जो हम क्लास में या स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो डीसी पर किए जाते हैं. उसमें हम हमेशा बैटरी यूज करते हैं ना, या फिर अगर टॉर्चेस हैं, डीसी कहाँ यूज होता है? जैसे टॉर्चेस है, या कहीं पे भी जो हमारी डे टू डे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे डीसी बैटरी यूज होती है. और ट्रांसमिशन के टाइम एसी यूज. दिस इज यूज फॉर transmission. Whenever you see a symbol of a battery, most likely it will be a DC current. Alright, I think that's all we need for standards of class 9th and 10th about AC. Thank you.